So good morning friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So just give me 1 minute so that we can make sure that we are very much connected and live. So friends, I would like to tell you one thing. The document for today's The Hindu analysis has been uploaded in our Telegram page, okay, Telegram group. So you can download it from there. आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो. तो ऑलरेडी जो है हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है. सो यू कैन डाउनलोड इट, ओके, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड हमारे साथ साथ जो है फिर आप साथ चल सकते हो. ओके, सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस इन टुडेज न्यूज़पेपर. रमेश नमस्कार, खुशबू गुड मॉर्निंग, तुषार गुड मॉर्निंग. ओके, so let's see what exactly is there for us. Okay, so rescue effort resume in Tapovan Dam tunnel. Okay, coordinated disengagement at the Pangyong. So Rajnath tells the Rajya Sabha. Now India and China, they are going for disengagement. This is really good new development. Okay, and good development, अच्छी development है ये हमारे लिए. So things are moving ahead on our positive in a positive line. But you have to know one concept. In 1962, okay, before war, such was the condition. Now Chinese withdrew from a particular position just before the war, and we after that fought a war with China. So this has happened in the past also. You can't trust Chinese. Okay, so our forces will have to be on their full preparation. Anything can happen. Okay, so surprises, you have to prepare for the surprises. Okay, and this is what can happen as it has happened in the past time also. पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है. ओके, सो अदर देन दैट 17 मेजर OTT प्लेयर्स अडॉप्ट सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट. वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट. ओके, थोड़ा इसके अंदर जानेंगे हाउ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू. ये बहुत ही एक मेजर इशू है. सो अदर देन दैट इंडियन मिनिस्टर इज सेइंग दैट फॉलो द लॉ. Okay, social media platforms have been told that they have to follow the law. Okay, now that's the problem here, because Twitter has said they are going to protect right to freedom of speech, and they are not listening to the government's instruction. That's why the problem is emerging. Okay, तो इसलिए problem थोड़ी emerge हो रही है. So Shweta, good morning. So let's move to our editorial section now. So I would like to tell you one thing: the agonizing cost of ham-handed development. Okay, so we'll look into this also, how Uttarakhand is fragile, what's the problem there. Okay, we are going to look into that. Biden's policy persuade the world order challenge. We are going to that also. We are looking into that also. इसको भी थोड़ा देख लेंगे. Other than that, there is a debate. India's digital service tax discriminatory. Okay, so we are going to cover up these editorials. इन editorials को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है ना. So because they sounds to be important. Okay, so resilient future for Uttarakhand, this will be covered. Apart from that, I would like to tell you one thing. We are going to cover one editorial from your business line. एक एडिटोरियल आपका बिजनेस लाइन से आएगा, एंड वन एडिटोरियल फ्रॉम योर फाइनेंशियल एक्सप्रेस. ओके, सो फाइनेंशियल एक्सप्रेस से भी हम लोग जो है एक एडिटोरियल उठाएंगे विच इज रिलेटेड टू योर अर्बन डेवलपमेंट. ओके, अर्बन डेवलपमेंट विच इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर उसके ऊपर एक एडिटोरियल आया एंड वी आर गोइंग टू कवर दैट. ओके, उसको भी डिटेल में कवर करेंगे हम लोग. सो सच इज द थिंग, एंड इफ यू सी दिस पर्टिकुलर पेज, नथिंग इंपॉर्टेंट इज देयर. कुछ खास यहाँ पे एज सच है नहीं. ओके, सो here this page, if you see, again nothing important. UPSC advertises for lateral entry in the central administration. Now this is a new debate. We'll look into this lateral entry debate. Okay, and what are the issues with this. थोड़ा बहुत issues को हम लोग जानेंगे कि क्या यहाँ पे हो रहा है. तो चीज़ें इतनी सिंपल है नहीं. ओके, डैम इन द पैराग्लेशियल जोन आर डेंजर. ओके, सो वी आर लुकिंग इनटू दिस. ये भी देखेंगे कि दिस इज एन एक्सपर्ट, इन्होंने क्या सजेशन किया है, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग. डिसेबल्ड एंटाइटल्ड फॉर फैसिलिटीज. ओके, court allows scribe for civil services aspirant with a neurological condition. We'll look into this. Okay, so इसके अंदर भी थोड़ा देख लेंगे क्या है. And most buses will still wheelchair unfriendly. Okay, here is a debate report which is coming out that after making so much effort, still we are not able to provide the accessible India to the disabled persons. Okay, so we are looking into these particular things. Now if you see, US imposes sanctions on Myanmar. So here is an issue. Okay, what's the issue? This is the problem for us. We cannot
afford to follow the line of United States. Okay, तो हम लोग यूएस की लाइन यहाँ पे नहीं फॉलो कर सकते हैं. You need to understand US has imposed the sanctions. Okay, so Myanmar is going to have good relation with China, and other than that insurgency, okay, northeast insurgency, you want to avoid such कंडीशंस. ओके, एंड यू नीड हेल्प फ्रॉम म्यांमारीज आर्मी. म्यांमार की आर्मी से आपको जरूरत है. तो दीज आर द रीजंस व्हाई वी कैन नॉट टेक द यूएस लाइन. हम लोग यूएस लाइन नहीं ले सकते, अदरवाइज म्यांमार विल बिकम अ क्लोजर फ्रेंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, देन इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर अस. तो तब हमारे लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक थिंग हो जाएंगी. एंड इफ यू सी हेयर ऑल्सो नथिंग इंपॉर्टेंट इज देयर. कुछ खास यहाँ पे एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है. सो लेट्स मूव टू आवर डिटेल डिस्कशन सेक्शन. डिटेल डिस्कशन में चलते हैं. सो 17 मेजर OTT players adopt self-regulatory toolkit. Now this is important. You have to understand this thing. At one end you have to make sure there is freedom, okay, freedom to carry out economic activity, to carry out economic activity, and right to freedom of expression. Okay, freedom of expression, freedom of speech and expression. Now these things are also important. Other than that, you have to have a system which should assure that law and order problem is not occurring in your country. Law and order problem kabhi na ho jaye. So this is the debate now. Law and order is also priority of the government, and freedom of speech and expression is also priority of the government. तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है. ओके, एंड दिस इज हाउ इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. यू हैव टू बैलेंस इट आउट. आपको जो है बैलेंस आउट करना पड़ेगा. एंड इन दैट सिनेरियो इफ यू सी सेल्फ रेगुलेशन, ओके, सेल्फ रेगुलेशन इज रियली गुड सोल्यूशन. सेल्फ रेगुलेशन ही एक सोल्यूशन होता है. मल्टीपल कमेटीज हैव सजेस्टेड दैट दीज फर्म्स शुड बी सेल्फ रेगुलेटिंग देमसेल्फ. वो खुद ब खुद अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करें. ये आइडिया है. Now, even as the government is soon expected to come out with regulations for OTT platform, okay, the Internet and Mobile Association of India on Thursday said 17 platforms, including Disney, Amazon Prime, have adopted a toolkit for effective implementation of self-regulation code. Now, these firms are going for a self-regulation code, and we have to encourage, okay. So instead of government coming up with the new rules, we have to encourage it. ओके, हमें ये जो है एनकरेज करना पड़ेगा. ये जो है आपको समझना है यहाँ पे. एंड दिस इज व्हाट हैज बीन पॉइंटेड आउट हियर. ओके, इफ अदर प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो गोइंग फॉरवर्ड, वी शुड वेलकम इट. हमें जो है उसको डेफिनेटली वेलकम करना पड़ेगा. इट्स अ गुड मूव. ओके, so UPSC advertises for lateral entry into central administration. Now lateral entry, government has said that okay, advertisement is out for recruit 30% at the level of joint secretary and director. Okay, so ये बात गवर्नमेंट ने बोली है. Now what's the debate here? Okay, so first of all the debate is that this lateral entry, you cannot, no provision for reservation. Okay, in this lateral entry no provision फॉर रिजर्वेशन. इसके अंदर कोई भी रिजर्वेशन का कोई जो है एक तरीके से यहाँ पे लेना देना नहीं है. नो, दे विल बी अपॉइंटेड डायरेक्टली एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, एंड वहां पे आप रिजर्वेशन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ दैट सम ग्रुप्स, some scheduled caste groups, ST groups, okay, they have raised apprehensions about it. So उन लोगों ने कुछ apprehensions यहाँ पे उठाई हैं vis-a-vis your lateral entry. Okay, so that's the problematic thing. But other than that, you need experts also in the administration. आपको administration में experts की भी जरूरत है. Okay, who can handle the situation. So government has to manage it. Government have to manage it somehow. They have to work on it. Okay, इसके ऊपर उनको definitely काम करना पड़ेगा. So the basic qualification for the applicant for joint secretary level is 15 years of work experience, and for the position of director is 10. Okay, for the position of director 10 years of work experience. So such provision has been made. ये provision एक तरीके से बनाया है. So disabled entitled to facilities, Supreme Court has said, okay, as I told you, there was a civil service aspirant who was facing some neurological condition, but government said, okay, this condition is not recognized as a disability. इस कंडीशन को आप डिसेबिलिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करते हो. ओके, दिस वाज द गवर्नमेंट स्टांस. ये जो है गवर्नमेंट का स्टांस था. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग from our prelims perspective. It is important, okay, that you should know what that disease was. Okay, the neurological disorders was writer's cramp. It's a neurological condition, okay, and important for your prelims. ये आपको prelims के लिए याद रखना है. And your state services, okay, state civil services, if you are appearing in those exams, for that also this is important. Okay, ये भी जो है एक तरीके से important है. Now
he was denied a scribe for civil service exam by UPSC 2018 में उन्होंने मना कर दिया था. Okay, because they were saying that this is not included in the benchmark disability. तो गवर्नमेंट के जो benchmark disability है उसके अंदर included नहीं होता. But you need to understand this thing. Court has said that okay, that principle of reasonable accommodation. Okay, now this reasonable accommodation is important because it is mentioned in your law. Okay, captures the positive obligation of the state and private parties to provide additional support to person with disability. तो अब additional support जो है सरकार को देनी है to person with disability, okay, to facilitate their full and effective participation in the society, कि वो अपना full और effective participation कर सके society के अंदर. So such thing has been made. Okay, now US imposes sanctions on Myanmar. So Biden demands that general relinquish the power. So as I told you, this is where US and India, okay, not on same page, not on same page, because the reality is that we cannot criticize, we can't criticize, okay, Myanmar's army. And because in the 1989 and 90 when the coup happened, at that time we criticized, तब हमने criticize किया था, but presently we can't because our northeast insurgency is one of the reason, China factor is another region. And you need to understand Myanmar's army helped India in the surgical strike. Okay, so surgical strike के अंदर भी Myanmar's army ने हमें help की थी. And for the intelligence आपको जो है उधर पूरे की पूरी म्यांमार आर्मी की आपको जरूरत पड़ेगी. नाउ दिस इज द रियलिटी, ये आपको समझना पड़ेगा और ये जमीनी हकीकत है. ओके, सो इन कॉल विद जी बिडेन टॉक्स ऑफ अनफेयर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस. नाउ चाइना और बिडेन के बीच में बात हुई है. ओके, सो बिडेन हैज सेड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. नाउ व्हाई दिस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ट्रेड लेन्स, ओके, ट्रेड लेन्स बेसिकली आपके जो है सी के थ्रू होती है. एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो बिकॉज इंडिया, इफ यू सी मर्केंडाइज ट्रेड, अगर आप हमारा मर्केंडाइज ट्रेड देखेंगे तो वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर सी लेन्स ओनली. हम भी सी लेन्स पे ही डिपेंडेंट है. अदर देन दैट द टॉक्स वर रिगार्डिंग द हांगकांग इशू, human rights abuses in Xinjiang. Okay, so these were the issues where they discussed. China has also said that okay, don't interfere in our internal matters. So reported to said that Hong Kong, Taiwan, Xinjiang are matters of internal to China. तो चाइना के इंटरनल मैटर एंड यूएस शुड नॉट इंटरफेयर इन इट. दिस इज व्हाट दे हैड. ये एक तरीके से उन्होंने बात की है. नाउ डैम्स इन पैराग्लेशियल जोन आर अ डेंजर. Now Ravi Chopra, okay, he is coming up with few statements and he is elaborating how it is important that we should not have dams in the particular region. Okay, so he elaborated the causes of Uttarakhand deluge and the challenges of hydropower development and what alternatives do we have. तो वो सारी बात इन्होंने बोली है. So you need to understand this thing. A mass of ice, no fresh water, it's a lethal combination. Okay, and this is how it was hurting. तो वो सारा का सारा एकदम स्लोप से जब नीचे आया, देन इट वाज अ हर्टिंग, बहुत ज्यादा नुकसान उसने पहुंचाया डाउन स्ट्रीम्स में जो लोग रह रहे हैं इन द वैली, उन लोगों को. ओके, सो इन द आफ्टरमैथ ऑफ डिजास्टर आफ्टर सेवरल पिटीशंस देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 2013 फ्लड्स. 2013 फ्लड्स के बाद सरकार ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया. Then Supreme Court formed a committee. Supreme Court formed a committee, okay, and they recommended that most of the hydropower project proposed by Uttarakhand government should be dropped. This was the suggestion of this committee, that whatsoever number of hydropower projects that they are going on, they should be dropped. उनको drop करना चाहिए. Okay. Now again second committee was formed. Then third committee was formed. Okay. Now in third committee, environmentalists were not included and engineers were included. Okay. Now it's a debate, should we allow hydropower projects to come up in that region or should we not? Okay, that's the game now which is going ahead. Now if you see the Clean Ganga mission, the Ganga draft law also played a significant role which influenced the center's decision to not develop any more new hydropower project. Now government know that hydropower project should not come up because it's a means you can say unstable area. Okay, because of the tectonic activity which is going on in Himalayas, you cannot have a hydropower project. Now Uttarakhand government has been constantly advocating for hydropower project. Okay, so the question is that what other sources do they have for electricity? Now this gentleman is saying that okay, the cost of solar power, if you see over the year, it has
रिड्यूस्ड, सोलर पावर आपको 2 रुपए में मिल रही है, हाइड्रो पावर विल बी प्रोड्यूसिंग, यू विल बी प्रोड्यूसिंग 7 to 8 रुपीज पर यूनिट. ओके, सो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू हैव अ हाइड्रो पावर फॉर वर्क ऑन द solar power. Okay, so this is the suggested solution, that we should work on the solar power and other renewable sources. Okay, now if you see danger, so 2013 incident and the present incident, it show that dam in the paraglacial zone. Now what is this paraglacial zone? Above the 2200 meters height. Okay, above the 22 meters height, it's called the paraglacial zone. It is said that it is a danger to have dams in that particular region, because लोग जो नीचे रह रहे होंगे उनकी लाइफ जो है खतरे में होगी, and this is what has happened. So we must have a solar power based development. Industrial development here also has to be thought through. Definitely you need to provide employment, आपको उस region के अंदर employment provide करनी है. So but it has to be done in a sustainable manner. Okay, sustainable development, sustainable employment you have to provide, and in that scenario he is suggesting that we need service based economy on information technology companies that will not be power intensive. Okay, so ये हमें करना है कि आपको जो है पावर इंटेंसिव जो एक्टिविटी है जो नहीं है उनकी तरफ ध्यान देना है. तो आईटी एक सोल्यूशन हो सकता है. अदर इज दैट देयर इज अ नीड टू डेवलप रोड्स, improve access. Okay, go about thoughtful sustained manner to contribute to tourism. Tourism is another very good industry जिसको जो कि यहाँ पे काटर किया जा सकता है. सो इफ यू सी ही इज सेइंग दैट होम स्टे के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अगर टूरिज्म वहाँ पे अच्छा हो जाता है डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी. ओके, most buses still wheelchair unfriendly. This is a report. It is saying that only 7% of the fully equipped to cater the physical challenge. Okay, government data is out. It is saying that less than 7% of the public buses in the country were fully accessible to wheelchair users. Okay, so ये सारी problem है. Now target is to have 25% of the buses accessible by June 2022. Okay, this is the target, that under the Accessible India campaign we are going to make our public transport disabled friendly, but the track record is really poor. Only the 7% of buses, okay, that we have, they are equipped to provide services to the disabled person. Okay, so Udki and Raj, good morning. So that's the present scenario. So it is very unlikely. Now this statistics is important. Okay, you need to mention about this statistics in your answer. तो आपको जो है इस statistics को अपने answer के अंदर लिखना पड़ेगा. Okay, because facts are important. Now let's move to this editorial. So India's leader must recommit themselves to ideas and activism of environmentalists involved in the Uttarakhand. Okay, now again this disaster is going on. We have constructed so many dams, rocks are falling. Okay, we have constructed roads हमने बनाई हैं. So ये सारी चीजें हमने कर दी हैं. Now इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम लोग जो है इस चीज़ों को समझें. ओके, सो सोशल साइंटिस्ट आर स्टिल असेसिंग कि डिजास्टर का क्या इम्पैक्ट है रीजन की इकोनॉमी पर, वेदर क्लाइमेट चेंज और अनचेक डेवलपमेंट इन इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन वाज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल. ओके, सो न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ एंशियंट टेम्पल वो डूब गए यहाँ पे अलकनंदा वाटर के अंदर आके. ओके, नाउ दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ब्रो borderland to sacred place. Okay, now artifacts found in the Himalayan foothills, okay, if you see it went back to 300 BC to 600 BC. Ashokan era ke edicts, brick altars, all these are found in this particular region. Okay, so if you want to preserve your artifact, then also it is important that you should not build dams. तब भी आपको डैम्स नहीं बनाने हैं, otherwise all these things will be submerged. ये सब कुछ जो है डूब जाएगा. So in 7th century, regional tradition of stone temple architecture commenced in Uttarakhand Himalayas. Okay, so here we have a stone temple architecture. The earliest shrine in these traditions were built at Palethi and Lakhmandal. Okay, now these are two places where the traditional shrines were built. Okay, but they were not very popularized. Okay, so however these two sites with royal patronage never became major तीर्थ जो है तीर्थ स्थान वो नहीं बने. ओके, सो जोगेश्वर सिचुएटेड वेल ईस्ट ऑफ लखमंडल एंड प्लेठी अटेंड दिस स्टेचर. तो जोगेश्वर करके जगह है वहां पे जो है एक तरीके से वो तीर्थ बना. ओके, नाउ बाय 12th century आर्किटेक्ट मास्टर मैसन स्कल्पचर्स फ्रॉम द लैंड फार अवे दे ट्रेवल टू उत्तराखंड टू बिल्ड टेम्पल्स, और बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल यहाँ पे बने. बाय 13th century लार्जर entourage of ascetics, okay, occasionally rulers from the distant land began
अंडरटेकिंग पिलग्रिमेज टू एस्टेब्लिश्ड एंड इमर्जिंग तीर्थ, सो वट एवर तीर्थ जो थे वहां पे, उधर जो है बाकी जगहों से लोग आने लगे। ओके, सो देयर जर्नी एक्टिविटीज अल्टीमेटली पेव्ड द वे फॉर चार धाम। तो इन चीजों से चार धाम की यात्रा शुरू हुई। नाउ दिस शुड नो दैट चार धाम टुडे कंसिस्ट ऑफ पिलग्रिमेज टू बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ओके, सो दीज आर द चार धाम्स. Like many other tirths in Uttarakhand, Badrinath and Kedarnath have long been associated with gods and sages. Okay, so Kedarnath is mentioned in Skand Puran. तो स्कंद पुराण में आपको जो है केदारनाथ का जिक्र मिलता है। एंड इन द मिडिवल लिस्ट ऑफ ज्योतिर्लिंग्स एंड इन द नेम्स ऑफ टेम्पल बिल्ट एज फार एज कर्नाटका, वहां पे भी आप जो है केदारनाथ की बात यहाँ पे करते हो। सो बोथ बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आर एसोसिएटेड आदि शंकरा ऑल्सो, आदि शंकरा हु विजिटेड देम इन 8th सेंचुरी। आदि शंकर जो है यहाँ पे 8th सेंचुरी के अंदर आए थे, उन्होंने विजिट किया था। ओके, सो पॉसिबली हिज फॉलोअर्स प्लेड अ रोल इन कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स एट पंडुकेश्वर। तो पंडुकेश्वर में डेफिनेटली उन्होंने एक टेम्पल बनाया था जिसके अंदर द्रविड़ा और नगरा दोनों स्टाइल के आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलते हैं इस पंडुकेश्वर के टेम्पल में। ओके, सो दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ओके, सो प्रीलिम्स के लिए आप इसको नोट डाउन कर लो कि पंडुकेश्वर के अंदर ये टेम्पल बनाया। द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्रेड सेंटर एट बद्रीनाथ कम्स फ्रॉम अ चार्टर डेटिंग टू 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी का एक चार्टर है जो पंडुकेश्वर में प्रिजर्व्ड है। ओके, उसके बारे में जो है बद्रीनाथ के बारे में उसमें कहा गया है। Given its location in the avalanche-prone area above the tree line, it is likely that Badrinath temple has been built and rebuilt several times. तो बहुत बार ये टेम्पल टूट चुका है क्योंकि avalanche वगैरह वहाँ पे आते रहते थे। ओके, तो बहुत बार इसे बनाया गया है। Now you have to understand, after 1962, the Indian government recognized that the world's highest and loftiest mountain range no longer served as a insurmountable wall. Okay, उसके बाद जो है आना जाना हो गया था, इन चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था। टू सेफगार्ड अगेंस्ट फ्यूचर इंक्लूजन अ मैसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम along the country's mountain ranges were launched. Okay, so northern mountain range के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है हमने लॉन्च किया क्योंकि अब हमें रोड्स जो है it was required that we need to build roads. Okay, सड़कें हमें बनानी थी क्योंकि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना था टाइम पे जो है ट्रूप्स को मोबिलाइज करने के लिए। So they were granted sizable budgets and charged with constructions of roads, tunnels, bridges, okay, cantonments, hospitals, dams, telecommunication pylons. So ये सारी चीजें की गई। एंड रिलीजियस टूरिज्म इफ यू सी वो भी यहाँ पे बढ़ता गया। एंड ओवर द टाइम ओके यू हैव अ वेरी गुड रोड नेटवर्क देयर, रोड नेटवर्क और अच्छा हो रहा है और पिलग्रिम्स और बाकी चीजें जो हैं और बढ़ रही हैं। मींस ह्यूमन फुटप्रिंट्स आर राइजिंग, ह्यूमन फुटप्रिंट्स जो है वहां पे इंक्रीज हो रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, जब ह्यूमन फुटप्रिंट इंक्रीज होते हैं तो एनवायरमेंट को जो है, इकोलॉजी को जो है ये थोड़ा अनस्टेबल कर देते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दैट रीजन। आपके ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट मूवमेंट्स वगैरह बढ़ता है तो उससे प्रॉब्लम होती है, आपका जो माउंटेन है वो थोड़ा फ्रेजाइल हो जाता है। So revisiting ideas, so 2013 Kedarnath floods and the flash floods that have swept away through Alaknanda Valley earlier this week suggest that ham-handed development in the name of God can come at an एगनाइजिंग कोस्ट। ओके, कि भगवान के नाम पे अगर आप सड़कें बनाओगे तो उसका नुकसान आपको हो सकता है क्योंकि वो इस तरीके की डिजास्टर लेके आ सकता है। दैट इज प्रूव्ड नाउ। सो ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स दे हैव मोबिलाइज्ड लोकल कम्युनिटीज टू प्रोटेक्ट उत्तराखंड फॉरेस्ट, क्रिएटेड लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड क्वेश्चन द विजडम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। ओके, सो ये सारी चीजें आई हैं कि हमें लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल बी आवर कोर्स ऑफ एक्शन, हमें हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा हमें देखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एडिटोरियल। इन बिडेन्स पॉलिसी परसुएट द वर्ल्ड ऑर्डर चैलेंज। ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड अनसर्टेनिटीज आर देयर विज अ ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट कि क्या होगा वहां पे। ओके, तो अगर हो जाता है तो ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट होगा न्यू ग्लोबल और रीजनल ऑर्डर के अंदर। सो इफ यू सी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, he had then promised that subject to Iran's compliance with its obligation, US would re-enter an agreement. Okay, so if Janta Kumarkar, good morning. So if US is entering to, if Iran is complying to the provision of joint comprehensive plan of action, US भी जो है वापस जो है इस एग्रीमेंट में आ जाएगा, ये बात बोली है। Okay, now problem here is that Israel, if you see, okay, Israel, Saudis are there, UAE and Arab countries. Now at one end they are there, other end Iran is there. Okay, so Shia,
Now US, they are US friends, okay, US is their friends, so ये इनके US के ties हैं, so they will put pressure on US that no, don't go for this particular agreement, don't go for this particular debate, okay. Other than that, Iran is building missiles, तो ईरान अपना मिसाइल बना रहा है, ओके, और ड्रोन बना रहा है, एंड these countries are not ready to accept Iran's supremacy. ईरान अगर पावरफुल होता है तो ये इन कंट्रीज को मंजूर नहीं है. That's the debate here. Okay. Now you need to understand Israel has given the opposite message. Okay, that it armed forces commander Lieutenant General Aviv, he is saying that the nuclear agreement was bad and must not be allowed. Okay, that US should not enter into this nuclear agreement. It's bad. Now Israel has operational plans to take decisive action. This is again offensive. Okay, so Israel has issued some offensive statements, and Israel and US other allies Saudi Arabia, UAE have also insisted that they be involved in the discussion with Iran on revival of agreement. Okay, other Arab countries are saying that उनको भी वहाँ पे बुलाओ discussion करवाने के लिए. Now there are some regional concerns. Mr. Biden has shown little urgency on JCPOA. Okay, there are some serious issues. Iran's regional influence remains significant, okay, because it is backing Shia militia in such diverse areas: Lebanon, Iraq, Yemen, Syria. So for the stability of the particular region, okay, it is required that Iran should reduce its हार्ड स्टांस. ओके, ईरान को अपना हार्ड स्टांस कम करना पड़ेगा. Iranian ability to mobilize militant across the region is viewed by Israel and some other Arab countries as threatening their security. वो definitely threat होंगे. Okay, the capabilities of Iran, precision missile and drones are also a matter of regional anxiety. Iran has focused on the domestic development of missiles due to international sanctions. Okay, अब ईरान के ऊपर international sanctions लगे हुए हैं, तो उसको लेके प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको लेके प्रॉब्लम है यहाँ पे. ओके, सो ये आप समझे. apprehensions will definitely be there because it's a religious divide. Okay, इस region के अंदर religious divide है, तो ये तो हमेशा रहने वाला है. So given the advanced air and missile power available with Israel, Saudi Arabia and other Gulf countries, there is no prospect of Iran curtailing its missile and other program. तो ईरान अपनी जो है मिसाइल और बाकी प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड देयर नेशनल सिक्योरिटी, फॉर देयर नेशनल सिक्योरिटी. अदर कंट्रीज आर वेरी पावरफुल. ओके, so what could be Biden's policy? So White House said that in conversation with Russian President Vladimir Putin, he made it clear that US will act firmly in defense of our national interest. So this is again a problem for us. Okay, so Aarti, good morning. So Subhash, I will address your question, please have patience. Okay, now you need to understand Russia. Again, it's a task for India. India के लिए ये भी एक task है. Okay, because you have to balance both India, US and India, Russia. That's the problem here. Okay, so these are the things which are going ahead. Now appointment of special envoy for Iran suggests that US is looking at a long-term diplomatic engagement. Okay, so a special envoy has been there for Iran, and it means that ये जो है nuclear issues के बाहर जाके भी बात करेंगे. Okay, on all the matters that have security implications for US and its regional partners. And in that scenario, missile and drone programs, they will also come under the discussion. US could offer some palliative to Iran, such as International Monetary Fund funds to combat the coronavirus. Okay, but with no early easing of sanction on oil sales. तो ये oil sales जो है जल्दी नहीं हटने वाला, sanction इनके ऊपर ये as it is रहने वाला है. So you have to just wait and watch. So the international lines, if you see, the battle lines will thus remain in place in the region. Israel, Saudi and the UAE will be in face off with Iran. Okay, ईरान के allies के साथ ये जो है ऐसा चलेगा. It's a prolonged war जो which is going on for many years. Okay, so a genuine regional effort to ease tension and promote regional confidence, spearheaded by Qatar. Okay, working with Russia, possibly China. Now this is what Qatar is doing. Qatar is saying that they are in direct engagement with Iran and they proposed a direct engagement. कतर जो है वो कह रहा है कि डायरेक्टली एंगेज करो, ब्रिंग इन द अदर पार्टीज, ब्रिंग इन द रशियंस, ब्रिंग इन द चाइनीज. ओके, बिकॉज रशियंस एंड चाइनीज दे हैव गुड रिलेशन विद ईरान. सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू पार्टनर्स डेफिनेटली यू कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द रीजन. ओके, इस एरिया के अंदर आप स्टेबिलिटी लेके आ सकते हो. एंड BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का जो चाइनीज प्लान है वो भी इस रीजन के थ्रू जो है लेके जाया जा सकता है. सो दिस इज देयर आइडिया. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. नाउ
Okay, so United States Trade Representative investigation report found Indian digital service tax, okay, to be discriminatory. Now it is important, you need to understand these digital platforms. Okay, if you see these digital platforms, they are located or based in US. US के अंदर based होते हैं and their business activity, okay, बिजनेस एक्टिविटी इज इन से इंडिया, इंडिया के अंदर इनकी बिजनेस एक्टिविटी हो रही होती है. सो इंडिया डू हैव अ राइट टू टैक्स देम. ओके, क्योंकि दीज प्लेटफॉर्म्स दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट. एड से इन प्लेटफॉर्म को रेवेन्यू आता है, इनकम आती है, एंड इट इज वेरी मच इन इंडियाज राइट दैट वी कैन टैक्स देम. हम इनको टैक्स कर सकते हैं, ये जो है प्रॉब्लम है. एंड द प्रॉब्लम हियर इज दैट मेजर फर्म्स, इफ यू सी द मेजर डिजिटल फर्म्स, मेजर कंपनी जो है वो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की है, इसलिए यूएस को मिर्ची ज्यादा लगती है. ओके, मेजर फर्म्स, इफ यू पिकअप गूगल, फेसबुक, सब कुछ जो है आपको यूएस का बनता हुआ नजर आएगा, और इसलिए यूएस को मिर्ची ज्यादा लगती है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग दैट the tax is inconsistent with the prevailing principles of international taxation. Okay, so the bone of contention is 2% tax that India has charged since April 2020 on revenue from digital service applicable to only non-resident companies. सिर्फ नॉन रेजिडेंट कंपनीज के ऊपर जो है ये चार्ज लग रहा है, एंड दे आर सेइंग दैट इट इज डिस्क्रिमिनेटरी. ओके, दे आर सेइंग इट इज डिस्क्रिमिनेटरी क्योंकि सिर्फ नॉन रेजिडेंट के ऊपर लग रहा है, मतलब बाहर की कंपनी के ऊपर, एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम यूएस. ओके, सो इंडिया इंट्रोड्यूस 6% इक्विलाइजेशन levy in 2016. From then to taxing a broader basket of online services in 2020. Okay, now you need to understand we are taxing them, it is required, okay, because it's an economic activity. And you have to rewind to 2013 when the debate was around base erosion and profit shifting program by OECD. Okay, now if companies listed in stationed in US and operating in India, its base location is in US but action is in India. So India also have a say in that, because income that firm is generating is from India. Income तो वो India से generate कर रहे हैं. Okay, so under the 15 action points, action point 1 was to look at a tax challenge of a digital company. Now this is a debate which is going on, how you are going to tax a digital company, and by 2015 action point 1 still remained a work in progress. Okay, ये अभी भी इस पे बात चल रही है. The main problem was to find a new way of taxing a digital company. कैसे इनको टैक्स किया जाए. Okay, they are not adequately taxed, वो adequately taxed नहीं है, and how are you going to design a rule कैसे आप डिजाइन करोगे. So the primary concern was that companies don't have a physical location in the market. Okay, so they operate in India but they don't have a physical location. So in India, in 2016 India became the first country to implement the equalization levy ऑन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एट 6%, की एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के ऊपर 6% आपको इक्वलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा. एंड दिस वाज बेसिकली ऑन पेमेंट्स मेड टू नॉन रेजिडेंट बाय अ रेजिडेंट. ओके, सो क्राइटेरिया इंडिया ने क्या रखा कि नॉन रेजिडेंट कंपनी को अगर रेजिडेंट जो है पैसे दे रहा है, रेजिडेंट इज पेइंग इट, ओके, देन 6% आप टैक्स दो. इन 2019 देयर इज in a sharp departure from its original thinking, OECD put up a policy note saying that there is an elephant in the room, which is the redistribution of taxing rights, that how you are going to redistribute the tax. Okay, so this need to be addressed. You need to understand this thing. The location is in US, working area is in India. So कैसे आप redistribute करोगे, ये प्रॉब्लम अब आ रही है. So India originally in 2018 had introduced a test for significant economic presence, कि how are you going to assure that the economic presence is there. In income tax act they made some provision. Okay, so if a company had user in India, it sort of defined its economic connection with India. तो अगर user इंडिया में है तो it means that आपको economic connection मिल जाएगा. Therefore it gives right to India to tax that transaction. उस transaction को India जो है tax कर सकता है. So this is what provision has been made and it's a good thing. Okay, so in a surprise move, the new equalization levy which expands the scope significantly. अब ई कॉमर्स भी आ गया और इसके बाद स्कोप और बढ़ गया. ओके, हमने 2020 में नया एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया. सो बिकॉज ऑफ दैट यूएस इज नॉट हैप्पी, क्योंकि यूएस मेजर फर्म्स जो हैं वो यूएस की हैं, एंड यूएस इज नॉट ओनली इन्वेस्टिगेटिंग इंडिया
10 other countries are also there जिनके अगेंस्ट ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है. ओके, एंड इट इंक्लूड्स कंट्री लाइक फ्रांस जैसे कंट्री के अगेंस्ट भी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इन 2016 on the recommendation of Akhilesh Ranjan committee report, okay, it has suggested that in order to create a level playing field, now you have to create a level playing field also. So physical brick and mortar के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट की एजेंसीज चल रही हैं, you are taxing them, बट ऑनलाइन को टैक्स नहीं कर रहे हो. ओके, ऐसा नहीं चल सकता. सो यू हैव टू ब्रिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन द ऑनलाइन बिजनेस एंड द ब्रिक एंड मोटर बिजनेस, डिजिटल बिजनेस. ओके, सो दे मे नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस बट दे आर कैरिंग ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर रहे हैं. इन दैट सिनेरियो आपको जो है इनको टैक्स करना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई वी कंसेप्चुलाइज दिस इक्वलाइजेशन लेवी. हमने जो है इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जिसने लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया, इक्वल कर दिया ब्रिक एंड मोटर को और डिजिटल प्लेटफॉर्म को. सो इंडिया हैज ऑलवेज मेंटेन्ड दैट वंस देयर इज अ ग्लोबल कंसेंसस इट वुड ईज, okay, it will cease to keep the equalization levy in force. They are saying that अगर global consensus बन गया हम जो है इसको पीछे खींच लेंगे. India has been engaged in the global discussion on OECD level, and OECD had promised to deliver a consensus-based solution by mid 2019. Okay, so discussion is on. We have to wait and watch कैसे इस पे बात बनती है. So unlike the 2016 levy, this 2020 levy was devoid of any sort of public consultation. यहाँ पे कोई public consultation नहीं हुआ, किसी भी firm से बात नहीं की गई. Okay, so it was just a surprise for digital community, and that's why US is angry. The first two deadlines for paying the equalization levy was also missed by a lot of multinationals. Now multinationals वो बिल्कुल पे ही नहीं कर रहे हैं. But you need to understand, you have a UK system, okay, UK digital taxation system which is better than India's system. Now we can learn from UK also, हम यहाँ से भी learn कर सकते हैं. So it underwent a significant public scrutiny. Okay, पहली बात हमारे यहाँ पे consultation नहीं हुई, UK के अंदर scrutiny हुई. Okay, the result is that it is more sound than what perhaps India's levy. India से ज़्यादा जो है UK का system अच्छा है. So how different is UK tax? UK tax कैसे different है? Now this is important. Okay, because if you want to write that what improvement should be made, you will write in this way that we can learn from UK and we can replicate UK system. So one of the primary criticism against India's equalization levy is that it is a tax on revenue as opposed being a tax on profit. भाई टैक्स तो आपको प्रॉफिट पे होना चाहिए, रेवेन्यू पे क्यों कर रहे हो? UK allows companies to not to pay any tax if their net operating margin is negative. अगर नेट ऑपरेटिंग मार्जिन आपका नेगेटिव हो रहा है, यूके के अंदर टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो दे आर सेइंग दैट take example of an Indian user located in UK receiving services from US company. So the UK tax contemplates that only 50% of the revenue from such a transaction would be chargeable. Means UK पूरा अमाउंट चार्ज भी नहीं कर रहा है. ओके, UK is saying 50% आपका चार्ज होगा. एंड इफ यू सी द इंडियन सिस्टम, वी आर चार्जिंग ईच एंड एवरीथिंग, वी आर कवरिंग एवरीथिंग. ओके, सब कुछ हम लोग चार्ज करेंगे, कंप्लीट ट्रांजेक्शन को हम चार्ज करेंगे. नाउ दैट्स द प्रॉब्लम. बट इफ यू सी द रिस्पॉन्स फ्रॉम यूएस, they are still not happy with the UK tax. UK tax को भी वो discriminatory बोल रहे हैं. Okay, so ये बात है, वो खुश नहीं होंगे. So investigation finds that India's equalization levy discriminate against the US companies. Okay, the reason for it is that the tax incident by design is on non-resident company. तो वो कह रहे हैं इसलिए डिस्क्रिमिनेट कर रहा है क्योंकि आप इंडियन कंपनी पे तो लगा ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ नॉन रेजिडेंट पे लगा रहे हो. ओके, सो 72% देखें कंपनी जो है वो यूएस की हैं, इसीलिए यूएस को ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है. फर्दर इफ यू सी, अखिलेश रंजन कमेटी रिपोर्ट सेड दैट आइडिया बिहाइंड द इक्वलाइजेशन लेवी वाज टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन ऑर्डिनरी बिजनेसेस. ओके, फिजिकल प्रेजेंस है जिनकी, उनके साथ और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, देयर शुड बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड. ओके, so no one can avoid taxes, this thing should be known. Other than that, if you see, the base erosion profit shifting project is based on the fact that digital companies are able to enjoy sustained economic presence in other jurisdiction without being physically present. तो इसलिए भी ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का प्रोजेक्ट यहाँ पे लगता है, एंड यू कैन टैक्स देम, आप उनको टैक्स कर सकते हो. द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज मूविंग टुवर्ड्स अ सिनेरियो वेयर सच ट्रांजैक्शन ought to be taxed. Okay, तो वहां पे वो टैक्स आप करोगे ही करोगे इनको. इंटरनेशनल सिनेरियो भी वैसा बन रहा है. द रिपोर्ट ऑल्सो क्लेम दैट DST taxes a company revenue rather than its income. Okay, ये है प्रॉब्लम, एंड इट इज इनकंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल टैक्स प्रैक्टिस that you should
टैक्स द इनकम, यू शुड टैक्स द प्रॉफिट, आप जो है प्रॉफिट को टैक्स करो, आप इनकम को टैक्स करो, ये बात इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द आर्गुमेंट, बिकॉज इफ द मार्केट इटसेल्फ इज डोमिनेटेड बाय यूएस फर्म्स, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो यूएस को डिसएडवांटेज पे होगा ही होगा। ओके, सो डोमिनेशन है ना यूएस की। दिस इशू बिकम्स अ वेरी पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल इशू बन गया है। ओके, सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन इसको बोलते हैं, एंड द प्रॉब्लम हियर इज दैट दिस सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन is a unilateral in nature. Okay, they are unilateral in nature, मतलब दूसरी पार्टी का यहाँ पे कोई भी से नहीं होता, सब कुछ जो है यूएस ही कंपनी करती है इन्वेस्टिगेशन पूरा। ओके, सो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, सो द पोजीशन दैट इंडिया हैज टेकन इज टू रिमेन कमिटेड टू द ओईसीडी प्रोसेस, वी आर कमिटेड टू दैट एंड इट विल बी पुट इन प्लेस बाय जून 21 तक जो है कुछ डिजाइन, कुछ आइडियाज जो है वो लागू हो जाएंगे, एंड यूएन इज टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ लीडरशिप, यूएन इज आल्सो लुकिंग इनटू दिस। ओके, दैट हाउ दे कैन हैव अ ऑटोमेटेड डीएसटी, कि इस टाइप की प्रॉब्लम दोबारा ना हो, ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम दोबारा ना हो, और एक ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो वहां पे आपको अवेलेबल हो जाए। ओके, सो सुभाष, आई विल एड्रेस योर क्वेश्चन। यूपीएससी आईएएस फॉर्म फिलअप स्टार्ट, सर IAS form fill up start. You have to wait. Okay, a notification is yet to out. Notification is not out. Okay, so you need to understand the issue is going on, whether the additional chance should be given to some aspirants or not. Okay, who missed out their chance during last corona crisis, क्या एडिशनल हमें चांस देना चाहिए? बिकॉज ऑफ दैट डिबेट यूपीएससी हैज नॉट कम आउट विद द notification. Okay, so you have to wait. So here is a demand to have a resilient future for Uttarakhand. Okay, so need of an hour is to invest in long term crisis response mechanism, कि आपको long term crisis response mechanism के अंदर invest करना पड़ेगा. Okay, because UK tragedy, Chamoli tragedy, this is not the first tragedy. 2013 it happened and 5,000 people killed. Okay, 5,000 people were killed, and presently also people have died. Now that's the problem, you need to work on it, you need to have a long term crisis response. Okay, otherwise life will be lost like it is happening now. Now why Uttarakhand is vulnerable? See, you have to first understand this thing. Uttarakhand is located in the midst of young and unstable mountains. Okay, and is subject to intense rainfall हो रहा है वहां पे, and because of this there is a devastation, काफी devastation हुआ है. For years geologists and climate experts, okay, they have voiced their fear about an impending disaster due to climate change की वजह से ये disaster होगी. Okay, rapid and indiscriminate construction activities which is going on, the subsequent ecological destruction in the region which is going on in the name of development. तो ये चीज नई नहीं है, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट ये सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है. नो हाउ इट इज क्रिएटिंग अ ट्रबल. ओके, so this current glacier burst, if you see, it is attributed to erosion which is happening over the years. Now ये erosion होती कैसी है? ट्रैफिक अगर आपका मूव कर रहा है, it makes your mountain unstable, तो वहां से rocks जो है वो नीचे आ जाती हैं. That's the problem. A build up of water pressure, an avalanche of snow, landslide, earthquake under the ice. That's the problem. It is टेक्टोनिक एक्टिविटी इज ऑल्सो गोइंग ऑन इन दैट रीजन. तो ये सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं वहां पे. एवलांच भी है, वाटर प्रेशर भी है, क्योंकि ग्लेशियर्स ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, वाटर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है. सो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. बिकॉज ऑफ दैट इट क्रिएट्स अ वीक जोन. ये आपका एक वीक जोन बनता है और ये प्रॉब्लम हो जाती है. सो व्हाट हैज इंट्रिग्ड द एक्सपर्ट्स? ओके, लोकल कम्युनिटी को यहाँ पे क्या ये प्रॉब्लम हो रही है? ये एक रेगुलर फ्लड सीजन बन गया है अनएक्सपेक्टेडली. ओके, एक्सपर्ट्स हैव आल्सो आइडेंटिफाइड लार्ज स्केल ह्यूमन सेटलमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लीडिंग टू मैसिव डिफोरेस्टेशन. ओके, मैसिव डिफोरेस्टेशन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. ठीक है ना? एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज ट्रिगरिंग दिस प्रॉब्लम. नाउ हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट had pointed out that 1/3 of the Hindu Kush Himalayan glacier would melt by 2100. Okay, and it potentially destabilize the river regime in Asia. तो आपके पूरे के पूरे एशिया का रिवर रेजिम जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है. दैट्स द प्रॉब्लम. ओके, ये एक मेजर ट्रबल है हमारे लिए एंड वी हैव टू लुक इनटू इट. इसके ऊपर हमें डेफिनेटली काम करना है. ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, इवन इफ ऑल द कंट्रीज इन द रीजन फुलफिल्ड देयर कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, स्टिल यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. आपको और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है. सो इट ऑल्सो वांट दैट एनी इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी वुड लीड टू मोर इंटेंसिफाइड डिजास्टर लाइक लैंडस्लाइड. कुछ तरीके की आप एक्टिविटी करोगे तो ऐसी प्रॉब्लम होगी ही होगी. राखी गर्ग, गुड मॉर्निंग.
growing. Okay, so experts and activists have incessantly asked for the scrutiny into the construction of hydropower project कि क्या हमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ करने चाहिए. Now this is the debate. Okay, big project versus small project. Okay, so experts are saying if it is required, if it is necessary to have a hydropower project, go for the small one, don't go for the big one. And this debate started with the coming up of टेरी डैम जब आया तभी से ये डिबेट स्टार्ट हो गई थी. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग. Other than that, use of explosives. Now you are using explosive in the construction of dams and other infrastructure. That's the problematic thing because it increases the instability. आपकी instability जो है वो बढ़ जाती है. Okay, so there was an expert committee led by Ravi Chopra. They said that to assess the role of dams in exacerbating the floods, provided hard evidence on how haphazard construction of dams was causing irreversible damage to the region. That in the name of development we have constructed so many dams and because of that it is causing irreversible damage to the region. आपका region पूरा का पूरा जो है damage हो रहा है. So some immediate steps are required. Now the question can be asked in your GS paper number 3. Okay, because disaster management वहाँ पे आता है. ठीक है ना. So these concepts are required. You can write them as it is. Okay, these are some steps what you can do. Okay, to have a good crisis response mechanism and resilience solution. Now these are the things. Invest in resilience planning. Okay, especially in flood prevention and rapid response. Now these things are required. For that you might have to increase the capacity of local government. लोकल गवर्नमेंट जो है वहां पे उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा आपको ताकि वो चीजों को अपने आप डील कर सके. Climate proofing the infrastructure such as by applying road stabilizing techniques for fragile roads के लिए आपको road stabilizing techniques लगानी पड़ेंगी. Strengthen the existing structures like bridges, tunnels, इनको strengthen करना पड़ेगा. Strengthen the embankments with adequate scientific know-how. Embankments जो है river के वो टूट जाते हैं तो river जो है outflow करती है तो आपको उसे रोकना पड़ेगा. Reassessing the development of hydropower and other public infrastructure. Okay, reassess करना पड़ेगा कि hydropower और बाकी public infrastructure आपको लगाना है कि नहीं लगाना. Other than that, you have to invest in the robust monitoring and early warning system. Okay, तो यहाँ पे आप satellite connectivity को लेके आ सकते हो. ठीक है ना. तो ये आप कर सकते हो सैटेलाइट के साथ, रिमोट सेंसिंग के साथ. यू कैन यूज इट. नाउ एस्टेब्लिशिंग इंप्लीमेंटेबल पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस टू रिस्ट्रिक्ट detrimental human activities. Now what's the problem here? Okay, we have rules. हमारे यहाँ पे rules हैं but poorly implemented. You have rules but implementation is poorly. Okay, poorly implemented. That's the problem. So you have to improve on these particular areas. So whatever construction rules that you are having, you have to make sure that those rules are implemented in letter and spirit. वो वहाँ पे हो. Okay, you need to have a eco and religious tourism policies. आपको अच्छी tourism policy लेके आनी है which has a scope for the this particular disaster management, जिसके अंदर disaster management का role भी अच्छा है. Okay, so investing in the training and capacity building to educate and empower local communities, उनको आपको empower करना पड़ेगा. Okay, so this is a wake up call. You have to work on it. आपको इन पे काम करना है. Okay, and if you see, you have to look for the inclusivity. Okay, inclusivity को भी यहाँ पे दे के आना है disaster management because poor जो है वो ज़्यादा price पे करता है. Now railway on track to financial sustainability. Okay, railway जो है उसकी situation अच्छी हो गई है. So they are saying this. We have to look into that. So if you see corona crisis आने से पहले भी railway आपका crisis में था. So because of corona the crisis increased. Okay, because revenue went down, आपका revenue एकदम से impact हुआ lockdown की वजह से. So the challenges before railway got increased. Okay, and passenger revenue बिल्कुल कम हो गया. ये सारी प्रॉब्लम थी and you had to continue the salary and pension payments. Salary और pension payment आपको continue करनी थी. If you look into the railway, it employs near about 12 lakh people. 12 लाख के आसपास एम्प्लॉई हैं. उनकी salary और pension देखना it's a difficult task. Okay, so but railway turned adversity into an opportunity. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे freight का movement fast हो गया था. Lines खाली मिलती थी तो freight की जो average speed है वो बढ़ गई थी. Okay, so the railway with its defined objective mission mode approach, inducting the technologies, management mantras, spree of innovation to cater to a new aspirational India. Okay, so railway ने जो एक तरीके से change बदली, अपनी approach बदली,
पैसेंजर ट्रैफिक चल नहीं रहा था, ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक आपको जो है एक तरीके से आपको मौका दे रहा था कि आप उसे बढ़ाओ। ओके, सो दीज वर द चैलेंजेस जो फेस कर रहे थे हम। एंड रेलवे हैज एंश्योर्ड आउटस्टैंडिंग ऑन ऑल राउंड परफॉर्मेंस, ऐसा ये बोल रहे हैं। सो फ्रेट बिजनेस, मालगाड़ी का बिजनेस इफ यू सी हैज बीन अ ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, काफी अच्छा चला, बिजनेस डेवलपमेंट अच्छी हुई, इज टेकिंग न्यू डायमेंशन, नई डायमेंशन जा रही है। ओके, एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम लेके आ रहे हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, सो लॉकडाउन की वजह से फ्रेट लोडिंग जो है वो इम्पैक्ट भी हो गई थी, बिकॉज यू लेबर वाज आल्सो नॉट अवेलेबल। ओके, लेबर भी वहां पे अवेलेबल नहीं थी। सो लोडिंग ग्रेजुअली पिक्ड अप, मैनेजर्स और बाकी लोगों के एफर्ट की वजह से, टाइमली पॉलिसी इंटरवेंशन की वजह से जो आपकी लोडिंग है वो धीरे धीरे पिक हो गई। द फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स at a division zone and board level, doubling of speed of freight train from 23 to 46, now these things were made। okay, so time table बहुत अच्छा बन गया था आपके पार्सल ट्रेन्स का, उनकी स्पीड डबल हो गई थी। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो हमने की हैं। नाउ दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव आउटकम्स। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड loading on the rise, so the impact of all these initiatives can be gauged from a fact that loading which had declined by 35%, जो अप्रैल में इतना कम हो गया था, वो अपने पुराने लेवल पे वापस आ गया। ओके, इट्स रियली गुड। सो पैराडाइम शिफ्ट इन बिजनेस अप्रोच, कस्टमर फर्स्ट जो है वो पहले हमने रखा। ओके, रेलवे ने, एंड ये कुछ चीजें कही हैं। एक्सपेंडिचर ऑप्टिमाइजेशन किया है गवर्नमेंट ने, रेलवे ने, ठीक है, चीजों को ढंग से खर्च करना। ओके, एंड वेल एडेड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूट्स जो है वो रेलवे ने इंट्रोड्यूस किए हैं। सो रेलवे फाइनेंसेस आर ऑल्सो इंप्रूविंग, आपकी जो है ऑपरेशनल कॉस्ट आपने कम की है, बहुत सारी सेविंग्स की हैं आपने। दीज आर रियली गुड सिस्टम्स विच आर वर्किंग। ऑपरेशनल रेशियो इफ यू सी, ओके, सो ये भी आपने सस्टेनेबल कर दिया है इन द मीन टाइम। सो व्हेन अ चेंज इन द फॉर्च्यून्स वाज राउंड द कॉर्नर, कोविड हैपेंड, कोविड एकदम से आ गया, रेलवे डिसाइडेड टू एब्जॉर्ब द शॉक एंड लॉस इन रेवेन्यू विदाउट बर्डनिंग द एक्सचेकर। ओके, सो एक्सचेकर को हमने बिल्कुल भी बर्डन नहीं किया है। सो व्हाइल पैसेंजर रेवेन्यू एट 61,000 करोड़, freight at 1.38 lakh crore will be the mainstay, ऐसा रहने वाला है। ओके, एंड द टारगेट इज टू इंक्रीज इट फर्दर, और इसको भी आगे लेके जाना है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स। ओके, सो वन फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट टू नो इज द जुडिशियस एक्सपेंडिचर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एंड दिस शुड बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस द गवर्नमेंट, अलग अलग सेक्टर्स में आप लेके जाओ। सो दिस ईयर इफ यू सी क्वार्टर रिकॉर्ड बजट एलोकेशन ऑफ 1.10 लाख करोड़। ओके, एंड टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले ऑफ 2.15 लाख करोड़। इट्स रियली गुड, इतना ज्यादा आ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? यू आर गोइंग टू क्रिएट एसेट्स, आप जो है एसेट्स क्रिएट करोगे, यू आर गोइंग टू इंक्रीज द नेटवर्क, इंक्रीज द रेलवे नेटवर्क, वो आप बढ़ाओगे, आप जो है बाकी चीजों में इन्वेस्ट करोगे। ओके, सो वी आर इन लाइन, वी आर वर्किंग ऑन आवर विजन 2024। ओके, सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट हैज बीन गिवन, ये चीजें जरूरी होती हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। ओके, सो दीज आर रियली गुड। सो रेलवे हैज प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान 2030। नाउ दिस प्लान इज वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, दिस प्लान इज सिग्निफिकेंट बिकॉज अर्लियर व्हाट यूज्ड टू बी सिस्टम, अर्लियर सिस्टम क्या होता था? इन्वेस्टमेंट यूज्ड टू बी डन बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन, आपके पॉलिटिकल कंसिडरेशन के बेस पे इन्वेस्टमेंट होती थी। रेलवे मिनिस्टर अपने एरिया में इन्वेस्टमेंट करवा देता था। नाउ यू हैव अ डेडिकेटेड प्लान विच इज अ डॉक्यूमेंट विच इज गोइंग टू गाइड द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ऑफ रेलवे। रेलवे किस हिसाब से फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाला है, वो सारी चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। ओके, एंड वी आर मूविंग अहेड, हमने जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी कम करनी है, रेलवे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, रेलवे इज मार्चिंग अहेड ऑन इट्स बिगर प्लान टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2023 एंड अ नेट जीरो कार्बन एमिशन नेटवर्क बाय 2030। बाय 2030 जो है हम लोग जो है जीरो कार्बन एमिशन की तरफ जाएंगे। दिस इज द प्लान ऑफ रेलवे, ये रेलवे का प्लान है। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, रेलवे इज रियली मूविंग अहेड। फार ऑफ एरियाज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, चीजों को बराबर कर दिया इन्होंने, बाकी चीजों को भी आगे लेके चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ओके, कनेक्टिविटी हैज इंक्रीज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके ऊपर भी बात हो रही है। सो दीज थिंग्स आर मूविंग अहेड। ओके, so let's move to another important topic, financing the urban infrastructure. See, if you look into 2018 mains, okay, the question on financing of rural bodies, okay, financing of rural development was asked. So in that scenario it is important that the financing of urban infrastructure is an important topic. Okay, so India's rapid urbanization is well documented. Okay, it is going to increase. India has between 1/3 and half of its population already living in high density areas में सब लोग रह रहे हैं। Okay,
सो ग्लोबल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एवरी एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन द अर्बन एरियाज, मेजरली इन अर्बन एरियाज. ओके, सो अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स, अर्बन इंडिया contributes near about 70% of India's GDP. 70% of your GDP is coming from your urban area. The poor quality of India's urban infrastructure means that need to invest in, और आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है. ओके, आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि ये आपका जीडीपी शेयर कम हो जाए. सो इंडियन सिटीज इफ यू सी, दे हैव टू इंप्रूव देयर रैंकिंग. बहुत सारे रैंकिंग के अंदर हमें इंप्रूव करना है. करंट रैंकिंग्स आर लार्जली ड्रिवन बाय पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पुअर है, बहुत प्रॉब्लम है. ओके, water, sanitation, air quality. So the high powered committee for estimating the investment required for urban infrastructure services estimate that investment required for finance urban infrastructure is rupees 39 trillion. 39 ट्रिलियन रुपीज की हमें जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर. ओके, प्राइवेट एक्सपर्ट्स आल्सो एस्टिमेटेड दीज नंबर्स. नाउ McKinsey, India's cities would require 1.2 trillion dollars in capital funding फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स. अगले 20 साल में इतने पैसे की जरूरत है. सो द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनविसेजेस 19 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इन अर्बन एरिया ओवर 5-year पीरियड टिल 25. ओके, फाइनेंशियल ईयर 25 तक हम लोग 19 ट्रिलियन रुपीज डालेंगे. इन चाइना, अर्बन लोकल बॉडीज हैव रिलायड ऑन लोकल सेल्स, लैंड सेल्स टू जनरेट इनकम which has been reinvested in other projects. Okay, कि आप जो है लैंड सेल करके पैसा लाओ और फिर वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा दो. दिस इज द चाइनीज मॉडल. सो while Indian urban local bodies have some land and building of their own, okay, a large part of land in the cities and town is either private or owned by agencies. या तो प्राइवेट है या फिर owned by the agencies हैं. ओके, सो ये हाल है इंडिया का. ठीक है ना. सो इन्वेस्टमेंट बाय अर्बन लोकल बॉडीज विल रिक्वायर लार्ज अपफ्रंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की उनको जरूरत पड़ेगी. ओके, फॉर विच अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया डू नॉट हैव द एसेट्स टू सेल. तो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज के पास कोई एसेट नहीं है बेचने के लिए अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहते हैं. तो ये मेजर डिफरेंस है. ओके, तो अगर आप लैंड सेल पे जाओगे, चाइनीज मॉडल तो सक्सेसफुल था क्योंकि उनके पास जमीन थी. हमारे वालों के पास एज सच कोई जमीन नहीं है. ओके, सो सच केपेक्स कैन बी फाइनेंस्ड बाय टेकिंग अ डेट ले सकते हो बाय लिवरेजिंग कैश फ्लो ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज. ओके, सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस्ड आउट ऑफ सच डेट इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू हायर एंड मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ. ओके, कि वो जो है थोड़ा एक तरीके से उधार ले लें. अदर देन दैट द अर्बन लोकल बॉडीज कैन कम अप विद अ बॉन्ड लेके भी आ सकते हो. इंडिया के पास भी सक्सेसफुल मॉडल है. ओके, सो यू हैव अ सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिन्होंने म्युनिसिपल बॉन्ड को सक्सेसफुल बनाया है. ओके, तो उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का हम यहाँ पे ख्याल कर सकते हैं. सो मैनी म्युनिसिपैलिटीज इन रिसेंट ईयर हैव रेज्ड फंड्स फ्रॉम द मार्केट से पैसा उन्होंने उठाया है. ओके, 40 बिलियन रुपीज के आसपास. स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ विच इज रिक्वायर्ड एंड कैन बी एनेबल्ड बाय द मार्केट. बिल्कुल आप कर सकते हो, मार्केट से पैसा उठा सकते हो. एक्सेसिंग द मार्केट फॉर अर्बन फाइनेंसिंग विल रिक्वायर urban local bodies to have predictable revenue stream. Okay, now you have to understand this thing. You want loan from the market. Who will give you loan if till the time you don't have a predictable revenue stream? आप अपनी इनकम तो पहले दिखाओगे तभी आपको लोन मिलेगा ना. अदर देन दैट यू नीड टू बिल्ड ऑन द कैपेसिटी. आपको कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि लोन गिवर विल गिव लोन इफ सी दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज द पोटेंशियल. अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पोटेंशियल है तभी जो है वो एक तरीके से आपको लोन देगा, नहीं तो नहीं देगा. इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर. ओके, सो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी आपको इनोवेशन लेके आनी पड़ेगी. सो प्रेडिक्टेबल यूएलबी रेवेन्यू, इफ यू सी रेवेन्यूज और इनफ्लोज फॉर द यूएलबीज कंप्राइज टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज, दोनों से ही पैसा आता है वहां पे. टैक्स इंक्लूड प्रॉपर्टी एंड व्हीकल. ओके, नाउ प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे क्या है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाते. बाकी देश लगाते हैं इसलिए वहां प्रॉब्लम नहीं होती, इंडिया में नहीं लगता. यूजर चार्जेस फॉर सर्विसेज लाइक वाटर, फायर, परमिशन. ओके, इन चीजों से हम यूजर चार्जेस लगा के पैसा लेते हैं. सो यूएलबी ऑल्सो गेट सम इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज, जो है उनके पास वहां से इनकम आता है. सो फॉर टॉप 35 म्युनिसिपैलिटीज इन फाइनेंशियल ईयर 19 द प्राइमरी रेवेन्यू बैलेंस, ओके, जितना था वो नेगेटिव था. मतलब उनके पास अपना खुद का अरेंजमेंट करने के लिए पैसा नहीं था. ठीक है ना, दैट वाज द सिचुएशन. ओके, एंड दे वर आइदर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट की वो वेट करते थे. ठीक है ना, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आई है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दे आर डिपेंडेंट ऑन डेवोल्यूशन और ग्रांट फ्रॉम सेंटर और रिस्पेक्टिव स्टेट्स. उनके ऊपर वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपने फंड्स के लिए. ओके, नाउ दीज ग्रांट्स एंड डेवोल्यूशंस आर समटाइम्स कमिटेड बट इन मोस्ट केसेस आर डिस्क्रिशनरी एंड टाइड टू अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. अब ये सेंटर और स्टेट जब ग्रांट देगा तो वो क्या कहेगा, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए डाल देगा कि पैसा अगर सड़क बनाने के लिए आ रहा है तो आप सड़क ही बनाओगे.
उसे हॉस्पिटल नहीं बना सकते। ओके, सो कन्वर्टिंग दीज ग्रांट्स दैट सेंटर एंड द स्टेट गिव्स टू अर्बन लोकल बॉडीज टू कमिटेड डेवल्यूशन विल अलाउ फॉर बेटर लिवरेजिंग। ओके, सो इसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, सेंटर और स्टेट की तरफ से जो ग्रांट आ रहा है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दो। ओके, सो इफ फॉर एग्जांपल अबव एनुअल 1.2 ट्रिलियन रुपीज इज कमिटेड एज अ प्रिडिक्टेबल एंड कमिटेड डेवल्यूशन, तो पहली चीज तो ये कि एक तो ये डिस्क्रिशनरी होता है, स्टेट और सेंटर की मर्जी है दे के ना दे। अब आप इसको पहली चीज करो कि इसको कमिटेड डेवल्यूशन बनाओ, पक्का बनाओ कि हर साल अर्बन लोकल बॉडीज को पैसा मिल रहा है। ओके, नाउ दीज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, आपको जो है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, सो कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। अर्बन लोकल बॉडीज को पैसा चाहिए, उनको अकाउंटिंग मैनेज करनी है, फाइनेंशियल चीजों को ठीक करना है, तो दे शुड हैव अ कैपेसिटी। ओके, उन चीजों को ठीक करना जरूरी है। फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई न्यू रेवेन्यू सोर्सेज, नए रेवेन्यू सोर्सेज आपको लेके आने पड़ेंगे, लीकेजेस को कम करना पड़ेगा। ओके, कलेक्शन को इंप्रूव करना पड़ेगा। सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एसेट, सारी जमीन इधर उधर पड़ती है, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है, स्लम बन जाता है, वो चीजें हर हाल में रोकनी पड़ेंगी। ओके, देयर आर कंसर्न्स ऑन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड देयर डिपेंडेंसीज ऑन 2 अदर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट व्हिच मे हैव अ डिफरेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। ये देखो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो भाजपा है, बीजेपी है। ओके, एंड पार्टी वहां पे आम आदमी पार्टी है, तो पॉलिटिकल डायमेंशन डिस्पेंसेशन डिफरेंट होने से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है ना, फंडिंग मैकेनिज्म पूरा बिगड़ जाता है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई ही ये रहती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है अभी है, इन चीजों को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो करंटली द मार्केट इज शैलो विद फ्यू इन्वेस्टर्स, बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं। ओके, जो कि आपके बॉन्ड्स खरीदेंगे, अर्बन लोकल बॉडी के बॉन्ड खरीदेंगे। नाउ बॉन्ड तभी अर्बन लोकल बॉडी के कोई खरीदेगा अगर अर्बन लोकल बॉडी को जो है अच्छे से चलाया जाएगा, अच्छे से मैनेज किया जाएगा। सो सूरत अर्बन लोकल बॉडी, ओके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बॉन्ड जो है अच्छे बिके हैं, अच्छा है। सो क्रिएटिंग अ वाइडर पूल ऑफ इन्वेस्टर विल रिक्वायर हैविंग अ प्रेडिक्टेबल एंड लार्ज पूल ऑफ सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स, और ज्यादा सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स होनी चाहिए। अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने अपने बॉन्ड्स इश्यू करें। दिस विल जनरेट इंटरेस्ट अमंग वेरियस लॉन्ग टर्म फंड मैनेजर्स, लॉन्ग टर्म फंड मैनेजर्स के अंदर ये इंटरेस्ट लेके आएगा। वन वे इन विच द म्युनिसिपल डेट कैन बी एनालाइज्ड एंड ट्रैक्ड इफ सच इन इशुएंस बिकम पार्ट ऑफ ETF लाइक भारत बॉन्ड। ओके, कि भारत बॉन्ड जैसा ही बना दो इसको आप, ठीक है ना, भारत बॉन्ड जैसा इसको बना दो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नाउ क्रिएटिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, अब ये बॉन्ड जैसे और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आपको लेके आने पड़ेंगे। सो रीस्ट्रक्चरिंग डेट इशूड बाय अर्बन लोकल बॉडीज रिक्वायर कंसिडरेबल स्किल्स, उनके ऊपर जो उधार है पहले तो आप उनको जो है रीस्ट्रक्चर करोगे। ओके, ताकि वो जो है उस लायक बन सके। सो स्ट्रक्चरिंग डेट विल रिक्वायर एड्रेसिंग कंसर्न्स ऑन अवेलेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड फुलसमनेस ऑफ द कैश फ्लो। ओके, कैश फ्लो अच्छे से हो रहा है, डेट ऑब्लिगेशन को आपकी अर्बन लोकल बॉडी जो है वो पूरा कर रही है। सो इन चीजों को करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहली चीज आपको प्रॉपर्टी टैक्स को यूज करना पड़ेगा। अर्बन लोकल बॉडीज शुड स्टार्ट टैक्सिंग द प्रॉपर्टीज। ओके, मल्टीपल अर्बन लोकल बॉडीज कैन कम टुगेदर टू पूल देयर रिसोर्सेज, मल्टीपल लोकल बॉडीज भी साथ आके अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकती हैं। ओके, क्योंकि कंबाइंड देयर क्रेडिट रिस्क जो है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, अगर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो महाराष्ट्र का कोई और सिटी भी यूज कर सकता है। सच थिंग कैन बी देयर, ऐसी चीजें हमें फैसिलिटेट करनी है। सो सच इनोवेटिव सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड ऑफ पूलिंग टुगेदर। ओके, अलग अलग स्टेट के अलग अलग एरिया के चीजों को पैसा इकट्ठा करके आप पूल इन कर लो। जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो चंडीगढ़ यूज कर ले। ओके, सो सच थिंग कैन बी देयर, ये चीजें आपको करनी है एंड आपको जो है ईज ऑफ लिविंग के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और ये प्रोवाइड करना है। सो दैट्स इट फॉर द डे, ग्रेट डे अहेड, थैंक यू वेरी मच।